Okay, hello everyone. I hope I am audible and visible. I think I am audible and visible. I think I am audible and visible. Yes, after a quick tech check, we're back, right? So majority of things are same. जो पिछले साल के उसमें न्यूज मतलब पिछले दिन के न्यूज में थी. Okay, hello Daksh, good morning. Okay, so hello Prisha. Okay, Parisha, right? Parisa. सो लास्ट डे की न्यूज में ही जो मेजर पार्ट था वही था. अगर उसका एक्सटेंशन जो हमें देखने को मिला, राइट. जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. नाउ इट मेक्स मोर सेंस. फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि लैंड फोर्स स्कैम केस में लालू यादव के ऊपर चार्जेस सेट होने वाले हैं, तो भैया चार्जेस लग चुके हैं. रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एज यूजुअल कुछ नए तरीके से हमला कर दिया है. एंड देन वही पर्टिकुलर एसआईआर की बात है. अरे और फिर फाइनली जो हुआ कल, लाइक यस्टरडेज द बिगेस्ट न्यूज वाज ममता बनर्जी इन तृणमूल कांग्रेस like hits the road, and the office of Amit Shah, Delhi, Kolkata, Jadavpur was stand, like everywhere was same kind of thing. Yes, so the thing is, like if we will discuss, I have seen some of the experts putting their opinion last day. सो कुछ इस तरीके के ओपिनियन थे कि द इन्फोर्समेंट लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, राइट, some of the experts are not happy with the way it is working. Some of them are also calling it extortion directorate. Yes, कि whenever like the current central government want to extract something from the opposition, they use ED. I mean, this particular case of IPAC, right? Yes. ये जो कंसल्टेंसी फर्म है ना, दैट इज समथिंग विच लाइक इट्स अ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, एंड दे रेडेड दिस पर्टिकुलर फर्म इन अ केस ऑफ 2020. यस. सो एक एक्सपर्ट है जिनका ये कहना था कि 2020 से मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है इनको पता था. एंड 2020 के बाद सडनली 2026 में बिफोर द इलेक्शन ऑफ बंगाल, द सडनली ईडी राइजेस एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं, we should go and raid the IPAC office. Right. It is also associated with the Prashant Kishore, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो. So, uh, so they call it extortion directory. And they also mentioned that approximate 95 plus percent of cases जो हैं वो opposition leaders के against है. There are just more than 200 case जो ईडी ने रेड्स मारी हैं, जिसमें से टू जो है फाइनल कन्विक्शन में रहे. And it is a series. दीदी did with Kejriwal too. Yes, that is what he was saying. Like it's a series of event where opposition party is ruling, or any alliance of opposition parties ruling. ED is one of the particular what we can say uh, agency that is going to raid before election. उन्होंने मेंशन किया अरविंद केजरीवाल के बारे में, हेमंत सोरेन के बारे में, राइट, मनीष सिसोदिया के बारे में, कई ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स उन्होंने भी दी. सो यस, इट लुक्स सस्पिशियस कि सडनली बंगाल में फोकस क्यों, बिकॉज जस्ट 2.5 months later they are having election, right. Yes. And then there is another part कि might be जो ममता बनर्जी ने किया है, जो सिटिंग सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने जो किया है वो गलत है. काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि देर आर लॉट ऑफ लीडर फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस एंड ऑपोजिशन जिन्होंने रीड ईडी रेड के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का alliance, जो अलायंस है, कोalition है, वो ज्वाइन कर लिया. सो ही वाज फ्यूरियस अगेंस्ट दैट एज वेल. ही डजंट वांट टू लूज मोर ऑफ द लीडर्स, राइट. सो यस, व्हाट वी कैन से,
उनका जो भी स्टेटमेंट था ममता बनर्जी का, दैट वाज अ good comeback. Like she said, ki IPAC worked for Chandrababu Naidu, also for Nitish Kumar, Jagannath Reddy, right? Then it was Prashant Kishore. Now the ownership has changed. I have to give them the responsibility to look after the IT cell and election. And we have this one. BJP has several crores of IT cell. तो ममता बनर्जी का ये कहना था कि सडनली वो जो इलेक्शन के पहले की रेड है वो कहीं और नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में ही हुई, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है. Now, both of the parties, whether that is ED or the Mamata Banerjee, they both have reached to the court and the High Court. They have like put FIR against each other. ईडी ने सेंट्रल एजेंसी को रोकने के लिए एफआईआर लगाई ममता बनर्जी पे. ममता बनर्जी ने डेटा चोरी, इलेक्शन, इन सारी चीजों के लिए एफआईआर की. सो दैट इज गोइंग कंटिन्यूस एंड इट्स लाइक आफ्टर सेवरल डेज, राइट. एक बढ़िया मैसिव ऑपोजिशन प्रोटेस्ट देखने को मिली है. मजा आ रहा है. आई मीन आई हैव सीन द विजुअल्स इन फ्रंट ऑफ द अमित शाह आर मिनिस्टर्स ऑफिस. आई हैव सीन द विजुअल्स फ्रॉम द like West Bengal. It's going really well. The thing is, uh, Rahul Gandhi actually somehow put the issue of vote chori in front of everyone. He never capitalized. But I think Mamata Banerjee is doing great. Okay, that was a small political comment. It has nothing to do with the exam. So ignore it. Right. ED, on the other half, they says ki the agency claims it like its officer were caused by the West Bengal DGP and police personnel to like after the official report they were threatened for arrest and if they record or recover anything from the raid. So that is something जो कि चीजें थी. हाँ, ठीक है. Can't blame BJP if they are smart and making things work in their favor. Daksh, the thing is, I'm not sure how much politics you know and how I am knowledgeable, but I think uh, vote with people are same thing. So people are won by debates, won by ideology, won by work. People are not for कि उन्हें जबरदस्ती जीता है. So elections are similar thing. Elections are not fought. Let's hope for the best. People will get to know कि क्या कैसा होगा. Now again, let's move to one of the foreign news. है ना? Uh, भाई साहब, ट्रम्प मेरे को ऐसा लग रहा है कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा के ही मानेगा. यस, थिंक अबाउट इट. आई मीन ही कीप्स टॉकिंग शिटी थिंग टू एनीवन, राइट, एट एनी टाइम. भाई उठता है और वो होता है ना कि जो वो लोग होते हैं ड्रंक लोग, वो सडनली उठते हैं, दे वर लाइक कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, एंड ही वाज लाइक आज वर्ल्ड वॉर 3 तेरा भाई करवाएगा. Yes, he was like इंडिया ने क्लेम ही नहीं किया, इंडिया ने कॉल ही नहीं किया टू सील द ट्रेड डील एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट वाज ऑल बुलशिट हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से. प्रॉपर इसका इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैंसिल किया गया है. उनके हिसाब से सीधा कहना, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डिस्कशन in the reported remark is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two countries, right? Complementary economy to look forward to concluding it. उनका ये कहना था कि भाई जब फोन ही नहीं किया तो हम ट्रेड डील कैसे साइन कर लेंगे. दैट वाज समथिंग की जो गलत था. सो क्या कहना है, ही टुक सीरियसली इवन द मैन सेड, आई थिंक उसको वो मीम पहुंच गया है. 26 में तो दुनिया खत्म है. खैर, अ, कई चीजें हैं जो मेंशन की गई. आई यस्टरडे आई रेड एन आर्टिकल, राइट. इंडिया और यूएसए के जो पर्टिकुलर ट्रेड डील अटकी हुई है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले पीपल आर नॉट बिलीविंग इन ट्रम्प साइड. यस, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ही सेड कि ही वाज द वन they concluded the ceasefire between India and Pakistan by telling Indian side, Pakistan said that we will do lot of trade, we will have a proper trade deal. एंड उसके बाद अब तक वो डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई. तो ट्रम्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है. एंड आई डोंट थिंक कोई बहुत सीरियस ले रहा है. लास्ट टेन्योर में तो देयर वाज दिस वेबसाइट व्हिच वाज काउंटिंग द लाइज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प. यस,
And this time we should have a website जो कि इसकी ऐसी उल्टी सीधी बातें जो है ना उसको काउंट करे. खैर, मूविंग ऑन टू द अदर एस्पेक्ट, इंडिया और यूएस की जो पर्टिकुलर ट्रेड डील है, राइट, इट इज हैविंग लाइक लॉट्स ऑफ लेयर एंड लॉट्स ऑफ सेक्टर्स. तो मे बी उसके कारण एक लंबा चौड़ा टाइम लग रहा हो, एंड नो कंट्री वांट्स टू seal proper like trade deal without getting proper beneficial benefit from the deal. मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि you can force anything to like on us and we should accept. एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे यूएस के, हार्वर्ड ल्यूटनिक, उनका जो रिमार्क था रिलेवेंट टू द Prime Minister Modi and our government, right? The US trade deal did not happen because Prime Minister Narendra Modi did not call US President Donald Trump, right? To wrap up the final stage of trade deal. That is something so inaccurate information. ओके, उनको रिप्लाई भी आया था कि जो एमई के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने बोला कि लाइक the absence of phone call was not correct as Prime Minister Modi and US President had spoken 8 different occasions in 2025. So अकेले 2025 में ही 8 बार कॉल पे बात हुई है, राइट. एंड 8 बार कॉल पे बात प्राइम मिनिस्टर्स दैट लाइक स्टेट हेड टू स्टेट हेड बात हो रही है. बैक एंड में जो डिप्लोमेट्स हैं वो कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, राइट, डील की कैरेक्टराइजेशन के लिए, डील को प्रॉपरली बैलेंस बनाने के लिए, दूसरी चीजों के लिए. एंड ही सेइंग ही डिड नॉट इवन कॉल. तो वो एक बहुत ही अभी कॉम्प्लिकेटेड सा डिस्कशन है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट दे वी कम आउट एज लाइक beneficiary, not the one who's suppressed by the American bully. Right? He acts like businessman than president. He's being businessman. Matlab, he acts like a, again, I don't want to use the curse word. He acts like a moron. I mean, when you, as a leader of the world, and you like world's strongest economy, you know, you should be like behaving like more like a leader rather than businessman. So SIT arrested the senior Tantri of Sabrimala temple in golden theft case. Yes, Kerala High Court, जिन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो की थी, अपॉइंट करी थी, उन्होंने जो चीफ तंत्री हैं, सीनियर तंत्री हैं, जो चीफ प्रीस्ट हैं, राइट, दी कंद कंदरारू, राजीवारू, राइट, उनको गोल्ड थेफ्ट के ऊपर क्या किया है, अरेस्ट किया हुआ है. उन्होंने सबरीमाला मंदिर से सोना चुराया. दैट इज व्हाट एसआईटी इज एक्यूजिंग. तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. अगेन, महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी पोल्स है उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ चल रहा है. एंड मूविंग ऑन to the national news. Now, India Taliban diplomat to take charge in Afghan embassy. Yes, काफी लंबे समय से इंडिया और तालिबान के रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी. एंड द वे इट वाज गोइंग ऑन, ये भी थोड़ा सा होता तालिबान के वापस पावर में आने में अफगानिस्तान में. द एम्बेसी वाज नॉट इन प्रॉपर फंक्शन. So they like they have finally contacted what we can say established a formal contact, uh, diplomatic contact to restore the full embassy of Kabul in October 2025. So काबुल में जो इंडियन एम्बेसी थी वो अक्टूबर 2025 में स्टैब्लिश हो गई थी. Taliban appointed diplomat recently arriving in New Delhi and took the charge of Afghan embassy. प्रॉब्लम ये है कि India has not formally recognized the Afghan government as the working function. But still, they allowed the embassy to work. Now, what is the status? अगर मैं diplomatic status की बात करूं दोनों कंट्री के लिए, राइट, जब तालिबान के लीडर आए थे काफी बवाल हुआ था, रिमेम्बर. सो इंडिया का स्टैंस जो है वो बड़ा सिंपल है. अगर मैं बात करूं इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से, तो इंडिया मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट विदाउट रिकग्निशन, right, using the functional diplomatic channel to coordinate humanitarian aid, development project, and political dialogue while safeguarding its security interest. राइट, ये इंडिया की तरफ से कि भैया वो चाहते हैं कि हमारी बातचीत रेगुलर है,
एंड इनसे हम अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड, हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सिक्योरिटी कंसर्न को क्या कर सके, आगे रख सके। मूविंग ऑन टू तालिबान एम्बेसी की तरफ से जो आया था उसमें मुफ्ती नूर अहमद नूर जो है सीनियर ऑफिसर्स, ही वाज appointed from the Ministry of Foreign Affairs in the New Delhi, and this is like we recently he is going to take the charge. तालिबान भी इसी स्टेप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि दे शुड हैव अ प्रॉपर नेबर एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद अस। दोनों का अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना। तालिबान जो है अमीर जो क्या नाम है फॉरेन मिनिस्टर का, आमिर खान मुताकी, है ना। उनका अपना कहना है कि बोथ साइड आर हैविंग लाइक both sides have their sovereignty and they have condemned any kind of terrorism, and they have a common friend, a very good friend, Pakistan. So they just somehow want कि भैया कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि चाचा कभी एक्टिव हो तो फिर हमारी दोस्ती में कुछ दरार आए। ठीक है, सो तालिबान एम्बेसी वापस फंक्शनल होगी। ध्यान रखना है, इंडिया इज येट टू रिकॉग्नाइज तालिबान ऑफिशियली। उन्होंने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उनको ओपन रखने का वो किया हुआ है। नाउ Delhi court frames the charges against Lalu Yadav for land in Lalu for the jobs का वो land for job वाला केस में, है ना। तो अभी जो चार्जेस हैं जो क्लियर होंगे तो फिर अपन वो करेंगे। मई 2022 से केस चल रहा है तो अभी वी कैन वेट। नो, दो चीजें अभी, यूपीएससी वालों थोड़ा सा टेंशन बढ़ा लो, राइट, ये दुख का ही नहीं खत्म होता। सो यूपीएससी वालों all candidates have to go undergo face authentication at exam venue, says यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट होंगे एग्जाम सेंटर्स में जाके ऑफिशियली दे विल हैव फेस ऑथेंटिकेशन, है ना। एंड जस्ट टू इंक्रीज द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम। The way and the number of cases in which paper leak is being caught, ये एक लंबा चौड़ा हो रहा है। तो अभी के टाइम पे यूपीएससी ने एक नया वो किया। वैसे जो फीचर्स हैं अगर मैं अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे पहले एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन है, राइट। सो ये फेशियल ऑथेंटिकेशन के लिए काम आएगा। सेकेंड थिंग, ये एक रियल टाइम मैचिंग होगी। यस, कैमरा एट द सेंटर कैप्चर्स द लाइव इमेज, है ना, ऑफ द कैंडिडेट फेस व्हिच इज देन digitally what we can say imposed and compared with the photograph uploaded during the online application process. So आप गए हैं, right? You started taking exam. The camera will basically capture your image, that, and then they will merge it with the application photo, and then they will have this particular authentication and photo compared, right? Sorry. This is also saying the system is designed very efficiently and very, what we can say, fast. It will take hardly take 8 to 10 seconds to complete this process of authentication. They will have a live detection, right, of the candidate, right. तो ऐसा नहीं है कि बैठ के तुम्हें ये सब करना है। And it's a new process, जिसे आप एक सप्लीमेंट्री चेक कह सकते हो। यस, जो रेगुलर चेकिंग होती है कि आप जाते हो, आप अपना आधार कार्ड या आप अपना पासपोर्ट लेके जाते हो, देन दे विल लेट यू एंटर द एग्जाम। वो जो स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन हो तो कंटिन्यू रहेंगे, राइट। बट ये भी एक एक्स्ट्रा होगा। जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि फोटो वो लगाए, उस क्वालिटी का लगाए जिस क्वालिटी का फॉर्म में बोला गया है, एंड रीसेंट लगाए। ये नहीं कि 5 साल पुराना लगा दिया, राइट। यस, तो अच्छा ये सिर्फ इसमें नहीं है, यूपीएससी का तो अभी स्टार्ट हुआ। दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जाम। इन्होंने पहले इसकी टेस्टिंग कर ली है एनडीए में, सीरियस वगैरह में। नाउ दे आर टेकिंग इट सीरियसली, दे आर मेकिंग इट टू द एंटायर पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से एग्जाम। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। असम बंगाल इन सब में तो चलिए। सेंट्रल ट्रेड यूनियन कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक ऑन February 12। यस, जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उन्होंने February 12 को वो किया हुआ है, स्ट्राइक कॉल की हुई है फॉर द न्यू लेबर कोड, राइट। यस,
We had this discussion about the new labor code in like पुरानी classes. So make sure कि उसको एक बार revise कर लेना कि what are the four new labor codes. So there are like 10 central union trade unions जो हैं they are on strike on February 12 against these implementation of these labor code. Oh, hello Aisha Bicce, good morning. ठीक है, सो थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. देयर आर थ्री मेजर न्यूज. एक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं वो अमित शाह के ऑफिस के बाहर वो कर रहे थे. ममता बनर्जी जो हैं वो बंगाल में वो कर रही थी, राइट. एंड बजट सेशन टू बी स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी 28. सो पार्लियामेंट के तीन मेजर सेशंस होते हैं: बजट, मॉनसून एंड विंटर. तो बजट सेशन की डेट्स वगैरह उन्होंने डिक्लेयर कर दी है. 28 से शुरू होगा. हाउ इवन मुमदानी connected to Umar Khalid, correct? Mamdani is not connected to Umar Khalid, correct? Mamdani is putting his views on Umar Khalid's arrest. मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता था बिकॉज इट वाज डिस्कस इन डिटेल बाय दी आई गेस केशव सर ने डिस्कस किया है, कृति मैम ने किया हुआ है, राइट. यस. So Umar Khalid is being held in jail from last 5 years in case of UAPA, that is Unlawful Activity Prevention Act. ठीक है. एंड 5 साल से हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है. एंड ही इज अप्लाइंग बेल फ्रॉम द सेशन कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड दे हैव कैंसल इट. फॉर नाउ दे हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 6 मंथ और 12 मंथ ऐसा कुछ है, until and unless the next application for bail he can file. Now, what exactly is the problem? Charges are undoubtedly serious. अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगा है, this is the serious charge. Just a minute. Yes, अगर किसी के ऊपर टेररिज्म जैसे एक्ट लगे हो तो दिस इज अ सीरियस चर्ज. बट दिस इज ऑल्सो सीरियस कि 5 इयर्स, दिस इज द सिक्स्थ ईयर एक्चुअली, फरवरी से शुरू हो जाएगा. 5 इयर्स से किसी की हियरिंग स्टार्ट ना होना, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल. 5 साल से यू आर नॉट एबल, लाइक द एजेंसीज आर नॉट एबल टू कलेक्ट इनफ एविडेंसेस टू फ्रेम चार्जेस एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द जुडिशरी. तो ये भी है द ममतानीज क्रिटिसिज्म फॉर नॉट गिविंग बेल टू उमर खालिद एंड शर्जील इमाम is on the basis of that, है ना. And again, we comment on Iranian protest, we comment on Trump doing some good work at Venezuela. Sorry, that was dark. I had this particular tweet yesterday, uh, uh, like in Twitter. I had read this. So if you have oil and doesn't have a nuclear weapon, the oil belongs to USA. एंड वहां पे नीचे उसके कैप्शन में लिखा हुआ था, थैंक गॉड आई हैव ड्राई स्किन. राइट. तो ये चीज है. सो वी कैन कमेंट ऑन दिस. एंड ममदानी, जो जोरान ममदानी है, ही इज मेंशनिंग दैट. ओके. सो यस, हम कहने के लिए किसी भी तरीके की क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, बट अगेन मैंने तुम्हें सीधा बोला कि यूएपीए आर इज अ वेरी सीरियस चार्ज. तो चार्जेस आर डेफिनेटली सीरियस. बट 5 साल से अगर एजेंसीज इनफ एविडेंसेस, इनफ डेटा नहीं कलेक्ट कर पाए गेट हिम इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी, तो ये भी एक क्वेश्चनेबल थिंग है, राइट. सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. वही सिमिलर पर्टिकुलर चीजें चल रही हैं. आई वांटेड टू डिस्कस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये अभी आया था. अगेन जो वो थे थलपति विजय की, उसमें जो स्टैम्पीड हुआ था सितंबर में, उसके लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो स्टैम्पीड साइट पे पहुंच चुकी है फॉर डिस्कशन, फॉर लाइक इन्वेस्टिगेशन. इफ ही हैड बाबा इन हिज नेम, let's not discuss this. I mean, recently some of the experts says just to give a parole to one of the rape convict, Baba Ram Rahim Singh and such. The government, local government has changed certain rules as well. मैंने पढ़ा नहीं है, but like legal experts are saying this. So let's hope for the best. कि अगर I hope ये गलत ही हो, it will send a very wrong message. So let's see. Now, DPDP Acts, right? Digital Data Protection Bill जो है उसकी बात करें, Digital Personal Data Protection Bill Act.
डज नॉट डाइल्यूट आरटीआई, राइट, ऐसा अटॉर्नी जनरल का कहना है। जी हाँ, जो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे आर वेंकट रमनी, इन्होंने बोला कि द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डज नॉट डाइल्यूट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, government source said. That is what is this. Now, what is data protection? अगर हम बात करें तो जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो 2023 में आया था। इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट कह सकते हो to have a comprehensive legal framework for the safeguard of digital personal data. Yeah, right. It was came into the effect and enacted in August, and later on notified by the DPDP rules 2025 in November. So, uh, नवंबर 2025 में ये फॉर्मल नोटिफिकेशन के साथ एक्ट हो गए। नाउ, अगर इस एक्ट की बात करें तो जो पॉलिसी रिसर्च के सेंटर्स एंड डिस्कशन है, should include restrictions like Australia. I agree. I think we should actually kill the social media, entire social medias. खैर, वापस आते हैं। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए गए हैं, है ना, जिनके बेसिस पे वो डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो है कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। उनका सीधा कहना, डेटा मस्ट नॉट बी प्रोसेस्ड only with free sorry, data must be processed only with the free, specific and informed consent from the individual. So सबसे पहली चीज तो ये है कि कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी उनका प्राइमरी मोटिव था। सेकंड, they wanted to have purpose and limitation for the time of collection. Data minimization, only necessary data should be collected, not all the data. Then accuracy, storage limitations, security safeguards, and accountability. Under these different rules, or we can say principle or objective, the data is being collected. Now, इस data principle में जो data bill है, उसमें they have defined the rights of individual as well, right? For example, right to access. Yes, right to correction, right to grievance redressal, and the last one was a right to nominate. Yes. So we as a right to individuals में right to access है कि हम जब चाहें तब पर्सनल डेटा एक्सेस जो है वो करें एंड लाइक इंफॉर्मेशन उसकी ऑब्टेन कर सके। करेक्शन का है कि इनएक्यूरेट डेटा जो है उसको करेक्ट किया जाए। If the mechanism has any failure or any kind of bad thing, right, उस टाइम पे हम उसके grievance को address करें and nomination कि like appoint someone to extract the exercise rights uh, in the event of death or incapacity. So जैसे मेरे पास कुछ डेटा है जो मेरा पर्सनल डेटा है मैंने रखा हुआ है, in case by some reason I died, तो मैं किसी को नॉमिनेट कर पाऊँ जो मेरे behalf पे वो डेटा एक्सेस कर सके। So जिस तरीके से पर्टिकुलर डेटा आजकल यूज हो रहा है उसमें दीज आर सम पर्टिकुलर गुड प्रिंसिपल्स एंड गुड ऑब्जेक्टिव जो हमने रखे हुए हैं एंड लाइक जब भी किसी को डेटा प्रोसेसिंग करनी होती है किसी एजेंसी को तो पहले नोटिस देते हैं, नहीं तो ब्रीच कहलाता है। तो हमें हमारे पास नोटिस आया तो ठीक है, नहीं तो हम उसे प्लीज कह सकते हैं। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, जैसा कि दक्ष कह रहे थे कि शुड इंक्लूड रिस्ट्रिक्शंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो उनका यही सीन है। दे वांट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अंडर 18, राइट, फ्रॉम द हार्मफुल ट्रैकिंग, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंडर ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है, राइट, एंड जो भी डेटा फ्रॉड्स है उन सारी चीजों की। सो अब इन्फोर्समेंट किस तरीके से होगा? जो फेज वन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है नवंबर से। फेज टू विल स्टार्ट इन नवंबर 2026 and phase 3 will start in May 2027. So phase 1 will have establishment of data protection board and core administration. So phase 1 में we are going to see, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये लाल लाल चल रहा है।
How's about blue? So phase one में we are going to have data protection board, right? So ये एक नई चीज है. देन फेज टू में जो कंसेंट मैनेजर ऑब्लिगेशन है, उन मैकेनिज्म को स्टैब्लिश किया जाएगा. एंड द लास्ट वन इज कि जो फुल कंप्लायंस है वो स्टार्ट होगा मई 2027 में. सो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से लाके आपके सर पे पटक दिया गया है ना. इट विल हैव फेजेस जिससे आपको भी क्या हो, समझने में आसानी हो. समझ में आ. सो यस, दैट्स द थिंग इज कि जिस तरीके की राइट टू प्राइवेसी हम डिफाइन करते हैं और जिस तरीके की हमें मिलती है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. तो लेट्स नॉट गेट डिस्कस दिस कि क्या चल रहा है क्या नहीं. देखिए, जो हमने बात की थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, राइट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. द वे बीजेपी इज वेपनाइजिंग द सिंपल एजेंसीज अगेंस्ट द पॉलिटिकल राइवल्स. सो दिस इज गुड एडिटोरियल. थोड़ा सा इसको पढ़ना, राइट. ये अच्छी चीज है. मतलब जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जिस तरीके से उन्होंने डेटा दिया हुआ है, दिस इज अ गुड एडिटोरियल. मूविंग ऑन. डी डॉलराइजेशन फेयर, एज आई टोल्ड यू कि जितने भी डी डॉलराइजेशन करने वाले होते हैं कंट्रीज, उनका यूएसए कहीं ना कहीं इस तरीके से बैंड बजाती है. फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, ईरान, दे ऑल हैड दिस पर्टिकुलर ड्रीम कि हम डी डॉलराइजेशन करेंगे. एंड रिसेंटली जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आल्सो प्रपोज कि कहीं ना कहीं हमें लोकल करेंसी जो है या एक ब्रिक्स करेंसी स्टैब्लिश करनी चाहिए जिससे डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो. तो इसीलिए चाचा ट्रम्प जो है वो ब्रिक्स के भी पीछे पड़े हुए हैं. रीड इट दिस वन एज वेल. इट्स अ गुड वन, राइट. Okay, then ground zero, the deleted, the doubtful, and the disenfranchised. ये जो है अगेन एक SIR के बारे में है. तो दिस इज एक्चुअली लाइक रिटन वेरी वेल. तुम्हें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी तो मेक श्योर कि पढ़ लेना. देन फाइनली वी हैड some business news जिसमें business BMW grows India sales by 18,000 plus units in the current year 2025 on EVs. So BMW और EVs जो है वो काफी अच्छे से वो हुए हैं. अगेन वही पर्टिकुलर चीज, रशिया हिट्स यूक्रेन विद द ऑशनिक मिसाइल आफ्टर रिजेक्टिंग द ट्रूस प्लान. भैया आप लड़ाई झगड़ा नहीं बंद करना चाहते तो हम लड़ाई झगड़ा बढ़ा देंगे. दैट इज व्हाट द पॉलिसी इज. ठीक है. एंड लंबा थोड़ा डिस्कशन हो चुका है रशियन यूक्रेन वॉर में, तो अपन बहुत लंबा उसमें वो नहीं करेंगे. विल देयर बी एमसीक्यूज? तक्ष, देयर विल बी एमसीक्यूज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. हम कुछ पैटर्न डिसाइड करना चाहते हैं, वर्किंग ऑन समथिंग जिससे तुम्हारे पास सारी चीजें हो. लाइक न्यूज के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि वो चलता रहे. ठीक है. सो वी विल गेट इट, नो वरी. राइट. और फिर यमन सेपरेटिज्म. यस. यमन क्राइसिस जो चल रहा है, if I'm not wrong, this is like 11th year of यमन क्राइसिस जितना मैंने पढ़ा था. यस. एंड जो ड्रामेटिक एस्केलेशन, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा क्या कहना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी में डेवलप हो रहा है. जब प्रॉब्लम इज दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग सिविल वॉर इन मल्टी मल्टी फ्रंट्स. राइट. एक सिविल वॉर ऐसा होता है कि भाई साहब गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक खड़ी हुई है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट दूसरा ग्रुप खड़ा हुआ है, राइट, और उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं. यहाँ पे अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग तरीके से लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं, राइट. सो अगर मैं बात करूं ओवरऑल फैशन की, तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है जो कि सऊदी अरेबिया वगैरह से क्या है, सपोर्टेड है ना. और ईस्टर्न साइड में और सदर्न साइड में इसका लेन देन है. देन वी हैव द सेकंड ग्रुप जो हुदीज है, राइट. यस, अंसार अल्लाह जो ईरान से सपोर्टेड है. वो नॉर्दर्न और गल्फ वाले रीजन में उनका एक कंट्रोल है. देन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जो यूएई के थ्रू बैक्ड है.
पहले ईडन कंट्रोल करती थी, अभी डिसॉल्व हो चुकी है। एंड देन देयर इज AQAP, ISISNA, जो इंटरनल ट्राइब्स और जो वो है दूसरे लोग हैं उनके थ्रू बैक्ड है. So it's going to be a different particular, this civil war is going at a different level. इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए. यस. सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 20 मिलियन पीपल, राइट, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यमन required the humanitarian assistance in 2026 according to the UN reports. Then there is a food security like issue, food security issue. Then there is 4.5 million people who displaced from their land. चिल्ड्रंस के ऊपर जो चल रहा है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, इन सब की अगर बात करूं तो दिस इज समथिंग जो कि एक लाइक काफी गंदा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट होने जा रहा है. सो फॉर नाउ गवर्नमेंट जो है वो पीस वगैरह इन सारी चीजों के लिए वो चाहती है, but they are not at all happy with this. Moving on, Trump says oil firm have pledged to invest $100 billion in Venezuela. Yes. So वेनेजुएला में अब तक क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज करते हैं. ठीक है. एक दिन पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने बोला कि आई शुड हैव नोबेल पीस प्राइज. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू गिव अ क्रिसमस present to the Venezuelans, and they arrested and kidnapped the Venezuelan president. Then the vice president became the president of Venezuela, and Trump was like कि हमें 30 to 50 million barrel क्रूड ऑयल जो है वो चाहिए in terms of compensation. Then they said कि हम वेनेजुएला को खुद चलाएंगे. Now he's saying कि the oil firms of US will invest $100 billion in Venezuela. Yes. While अगर मैं बात करूँ तो Venezuela's largest oil reserve, if I'm not wrong, like 303 billion barrel plus. And there was a time when they had good relations. After the socialist revolution in Venezuela, under the leadership of Hugo Chavez, इनके बीच की जो लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ गया, and they were not at all seeing each other in a very good way. So for now, like ट्रम्प का ये पर्टिकुलर ट्रूथ सोशल में ये वो था पोस्ट था कि एटलीस्ट $100 billion will be invested by the big oil, right? All of whom I will be meeting today at the White House. So let's see कि वेनेजुएला का फ्यूचर कहाँ जाता है. For now, it's a problem, right? ये भी एक अच्छा एडिटोरियल था, अगर तुम्हें पढ़ने का मन है. सो इम्पैक्ट वगैरह सारी चीजें, तो ये एक अच्छी चीज, अच्छा वो था, है ना, कि ये क्या चाहते हैं. स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था. What will Arab, Europe, and America do? What will happen when there is no oil left? जब कुछ oil नहीं बचेगा, तो they will have some other particular thing. Venezuela is also having huge gold reserve. Not the largest, but they have gold reserve. So they might go for gold. फिर rare minerals आ जाएंगे, फिर यूरेनियम एंड अदर न्यूक्लियर फ्यूल होगा. सो ये तो कंटिन्यू होता है ना. बुलीज के साथ क्या है, बुलीज आर समथिंग जिनको एक के बाद एक इश्यूज चाहिए. यस. नहीं तो वो अपने आप को रेलेवेंट कैसे दिखाएंगे. एंड सिमिलर इज विद द एक्सट्रीमिस्ट, राइट. एक्सट्रीमिस्ट के साथ भी यही होता है कि वो रेगुलरली क्या करते हैं, अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए एक्सट्रीमिज्म जो है, वेदर दैट इज फ्रॉम वन कम्युनिटी और कल्चर टू अनदर कम्युनिटी कल्चर, ये कंटिन्यू दिखाते रहते हैं. ठीक है. तो bullies and extremists, they both just want to be relevant, जबकि they are completely irrelevant. So they do that. So this was the newspaper for today. From Monday onward, right? Uh, just a minute. Monday onward, we are going to have a fixed pattern, जिसमें हमारे पास एक या दो पैसेज बेस्ड वो होंगे, क्वेश्चंस होंगे, right? And we will have some other objective questions जो directly paper से होंगे, passages से होंगे. So it will have some particular
more fun in the newspapers, right? कुछ तो मैंने बनाए भी थे, बट वो पैटर्न नहीं जस्टिफाई हो पा रहा था, so मैंने सोचा कि ठीक है, we will do it after some time. On Monday onward, we will going to have it. So this is it from my side for today. Right. I hope you guys enjoyed the session. I'll see you on Monday with fresh start and what we can say questions as well from the Hindu itself. And till then, life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. I'll see you soon, guys. Have a great day ahead. Keep learning. Sorry.